हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसेज अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे LLM फ्रॉम MNLU नागपुर के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट LLM program which MNLU Nagpur offers, which is a very new college. It is not that old. So उनका LLM program के बारे में भी अभी ज़्यादा information नहीं है. So we will see what and how is their LLM program. So we will be talking about the program details, the admission process, the specialization that MNLU Nagpur offers, and if there is any placement data for the LLM candidates. तो सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अ क्लैट पीजी स्कॉलरशिप टेस्ट. तो अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी 2024 और 2025, then you can get up to 100% scholarship. The test is on 17 September, so you can register from the link on your screens or from the link in the description box. तो अब आते हैं LLM फ्रॉम MNLU पे. तो इनका जो LLM है वो 1 year LLM है एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेमेस्टर्स. तो आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा फॉर MNLU नागपुर. जो टोटल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स है वो एट द प्रेजेंट मोमेंट 60 सीट्स पे है. तो आप देख सकते हैं कि इन दी 60 सीट्स व्हाट इज द डिविजन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. देयर इज सम डोमिसाइल कोटा एज वेल. पहले MNLU नागपुर में कम सीट्स थी, तो इसलिए जब आप कट ऑफ ट्रेंड देखेंगे तो यू विल सी दैट थोड़ा सा ऊपर नीचे है विद रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स, बट नाउ द सीट्स हैव बीन रेज्ड टू 60. अब फी स्ट्रक्चर जो है अगेन दिस विल कीप ऑन चेंजिंग. दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर 2023-2024 बैच, जिसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 3,13,000 इंक्लूडिंग योर हॉस्टल अकोमोडेशन एंड मेस चार्जेस विल बी योर फी फॉर दिस 1 year. Now let's look at the specializations, which is the most interesting part, क्योंकि generally NLUs 3 से 4 specializations offer करते हैं, but MNLU नागपुर में there are a lot of options. So first is corporate and commercial laws, फिर है आपकी intellectual property law, फिर है आपका constitutional law, personal laws, energy and telecommunication law, criminal law and forensic science. So you can see that there are a lot of options from which you can choose. इसके अलावा उन्होंने 15 सीट्स एक जनरल LLM के लिए भी रख रखी हैं. So if you don't want to specialize in anything, if you want to have a general LLM, then there are 15 seats reserved for that as well. Now let's talk about the admission process. Admission is through the CLAT PG exam itself. So this exam is held every year in December for the upcoming academic year. तो अगर आपको MNLU नागपुर या बाकी के किसी भी NLU में एडमिशन लेना है तो आप CLAT PG का एग्जाम दे सकते हैं. अब कट ऑफ ट्रेंड्स अगेन एज आई सेड विल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि पहले सीट्स भी थोड़ी कम होती थी. तो आप देख सकते हैं कि 2020 में देयर वाज लिस्ट क्लोज अंडर 900 और उसके बाद सब्सिक्वेंटली the cutoffs has increased. So cutoff will depend on individual year, but अगर आप expect कर सकते हैं कि if you get anywhere between 1500 to 2000 all India rank, then you will be able to get into MNLU Nagpur for their LLM program. अब आते हैं प्लेसमेंट्स फॉर LLM कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ नॉट रियली अवेलेबल इन पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू LLM कैंडिडेट्स, क्योंकि जनरली आप जब भी प्लेसमेंट डेटा देखते हैं इट इज़ अबाउट द UG कोर्स. So unfortunately for MNLU Nagpur, they don't have any placement data, and it is a very recent college, so it's a very possible chance that they don't have any placements for their LLM candidates. तो आप उसके हिसाब से ही डिसाइड करिए कि आपको इस कॉलेज से LLM परस्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन प्लेसमेंट है तो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट कॉलेज फॉर दैट. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको स्पेशलाइजेशंस में इंटरेस्ट है इनके और बाकी जगह अगर आपको वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिल रहा है, so then you can definitely consider this college. So make a decision based on your personal situation and what you expect out of your LLM degree. With this, we come to the end of our video. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.